Hello everyone, welcome to CNA, the daily newspaper analysis. So today we are back with the following list of topics to discuss. So let's start. The first topic says about the Maharashtra passes Lokayukta bill bringing chief ministers under its ambit. Okay, so recently we have seen that Maharashtra has came up with this bill and the Maharashtra Assembly unanimously passed this Maharashtra Lokayukta Act of 2022. So, this will give additional powers to the Lokayukta to direct state agencies to prove public servants, including chief ministers and also state ministers. So, as per this act, any present or former chief minister of Maharashtra can be investigated by the Lokayukta only if the motion for the same is passed by the legislative assembly by a 2/3 मेजोरिटी। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज ऐड किया गया है कि 2/3 मेजोरिटी से यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में एक मोशन पास करवाना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे एक लोकायुक्त प्रेजेंट और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। Also, the approval of the governor and views of the group of ministers appointed by the governor is required to conduct an inquiry into present or former ministers. So, similarly, the approval of the council chairperson or assembly speaker is required to prove the legislative manner. ठीक है, तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ा टफ सा प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि कुछ ना होने से कुछ होना बहुत अच्छा बात है। ठीक है, तो ये फिलहाल के लिए ये टोटली पॉलिटिसाइज करके रखे हैं, लेकिन फिर भी आज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लोकायुक्त, जहाँ पे लोकायुक्त थे नहीं, तो आज हम लोग यहाँ पे लोकायुक्त को एक इंस्टीट्यूशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, बिकॉज वी कैन सी दैट देयर आर वेरियस नंबर ऑफ स्टेट्स विच आर विदाउट लोकायुक्त. You can see all these red color markers, be it Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand. Then in the northeast, we have Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram. And then we have in the eastern corridor, West Bengal, Orissa, Telangana, Andhra Pradesh, as well as Tamil Nadu. ये ईस्ट का सब एरियाज ही पूरा टोटली नट कवर्ड है किसमें, लोकायुक्तस में। ठीक है, तो ये बेसिकली थे अबाउट द लोकायुक्तस। सो वी नो अबाउट हु इज अ लोकायुक्त। सो ही इज एन एंटी करप्शन अथॉरिटी और ओम्बड्समैन which is an official appointed by the government to represent the interest of the public. So most importantly, he investigates allegations of corruptions and maladministration against public servants and he is tasked with speedy redressal of public grievances. ठीक है, तो ये हम लोग का इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था by the Lokpal and the Lokayukta Act of 2013 which came after the आंदोलन दैट वी कैन सी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अन्ना हजारे। ठीक है, तो ये बेसिकली लोकायुक्त के बारे में थे, सिंस महाराष्ट्र यहाँ पे बिल लेके आए थे तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे ये लोकायुक्त न्यूज में थे। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। 18 चिल्ड्रन डाई कंज्यूमिंग सिरप मेड बाय इंडियन फार्म इन उज्बेकिस्तान। तो ये बेसिकली जो लास्ट टाइम गैम्बिया में हुआ था, ठीक है, सिरप खा के लोग मरे थे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फिर से उज्बेकिस्तान विच इज बेसिकली अ कंट्री ऑफ द सेंट्रल एशियन नेशन, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मरे हैं, 18 चिल्ड्रन। ठीक है, ये कम है एज कंपेयर टू 66 चिल्ड्रन हु डाइड इन गैम्बिया, इट्स एन बेसिकली इन अफ्रीकन कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि द चिल्ड्रन कंज्यूम्स एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ दिस कफ सिरप व्हिच कंटेन इथाइलिन ग्लाइकोल, अ सब्सटेंस दैट ऑट नॉट टू बी प्रेजेंट इन अ कफ सिरप। तो ये बेसिकली जो हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दैट इज द इंडियन कंपनी मैरियन बायोटेक्स। ओके, तो उनका कफ सिरप था, तो इसीलिए यहाँ पे जो सेफ्टी कंसर्न है इसके ऊपर में यहाँ पे उन लोग का एक सवाल उठाया है कि यहाँ पे गवर्नमेंट या WHO के द्वारा भी यहाँ पे एक रेगुलेशन जारी किया है कि हाउ there should be a global alert over 4 cough syrups that were linked to the death of almost this 66 children in Gambia and now 18 children in Uzbekistan. ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया है और हम लोग इंडिया भी यहाँ पे डिटेल्स मांगे हैं कि किस बेसिस पे यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली इस पर्टिकुलर कफ सिरप को इल्जाम लगा सकते हो, तो उसका एक डिटेल्स लाया जाएगा और इंडिया के थ्रू इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा, तब जाके यहाँ पे हम लोग केस को सेटल कर पाएंगे इन द फ्यूचर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। रिटर्न ऑफ शरिया सिस्टम इन अफगानिस्तान। तो आप भी देख सकते हो कि रिसेंटली यहाँ पे जो वुमेन एजुकेशन है ये टोटली ब्लॉक कर दिया गया है, वुमेन्स को अलाउ नहीं किया जाएगा अभी पढ़ने वढ़ने के लिए। तो अभी इन लोग का जितने भी पढ़ाई है पूरा सिस्टम पूरा स्तब्ध हो गया है यहाँ पे। तो अभी इसीलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं
कि जो शरिया सिस्टम है उन लोग का, वुमेन को पूरा कवर करना है, ठीक है। तो ये पूरा चीज इन लोग के यहाँ पे वापस आ गया है, ठीक है। सो व्हाट इज दिस शरिया लॉ? सो इट इज द लीगल सिस्टम ऑफ इस्लाम दैट फाइंड्स इट रूट्स इन द कुरान, हदीथ्स एंड फतवास. So the literal definition of Sharia is the clear, well-trodden path to water. So the law lays down governing principles for spiritual, mental, and physical behavior that all Muslims should adhere by, and is often regarded as Allah's command for its believers. So the law categorizes the act of followers of Islam into 5 categories: obligatory, recommended, permitted, discouraged, and forbidden. So, for instance, the giving and receiving of interest, gambling, prostitution, consumption of alcohol, and extremely risky investments are prohibited in Islam. So, there are 5 different schools of Sharia law. There are 4 Sunni doctrines, be it the Hanbali, Maliki, Safi, and Hanafi. So, and one Shia doctrine, which is the Shia Zafari. So, these doctrines differ in how the schools interpret the text from which Sharia is derived. तो अभी हम लोग देखते हैं कि शरिया के बेसिस पे बहुत सारे एक्सट्रीम पनिशमेंट्स दिया जाता है अगर यहाँ पे कोई फॉलो नहीं करता है और अगर कोई वायलेट करते हैं तो सपोजली पीपल इन्वॉल्व इन एडल्ट्री मस्ट बी लैश्ड 100 times, मतलब उनको मारा जाएगा. So if unmarried, they must be exiled for a year, and if married, they must be stoned to death. Also, amputations of hand of those found guilty of theft. Apostasy is a grave crime in Islam, and the law prescribes the death penalty for this apostates. ठीक है. सो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे इनका जो एक प्रोसेस है ये बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसेस है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे एपोस्टेसी के बाद ही बोला गया है. सो एपोस्टेसी ये सब होता क्या है? इट्स द अबैंडनमेंट और रेनाउंसिएशन ऑफ अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ्स और प्रिंसिपल्स. अगर कोई इस्लाम छोड़ दे तो उसको एपोस्टेसी माना जाता है. सो इट्स अ ग्रेव क्राइम इन इस्लाम एंड द लॉ प्रेस्क्राइब डेथ पेनल्टी फॉर एपोस्टेट्स. ऑल्सो यहाँ पे बोला गया है कि जो एल्कोहल कंज्यूम करते हैं उसको 40-80 कोड़े लगाना पड़ेगा, लैशेस. Okay, so it is to be noted that hudud is the only form of punishment under Sharia law, and it ranges from public lashing to stoning to death, amputation of hand, and even crucifixion. ठीक है. सो देयरफॉर यहाँ पे बहुत सारे टाइम पीरियड से भी यहाँ पे जो तालिबान रेजाइम है तो lives of the women were very much affected because of this regime. Because we could see that women were allowed to venture out of their homes provided they cover their face and were accompanied by a male relative. Women were barred from having their pictures taken, filmed, or displayed in newspaper, books, stores, or even at their own homes. All the windows on the ground and the first floors of residential buildings were either painted over or covered with a screen to avoid women from being seen from the street, and they were not allowed to roam on their balconies. High heel sandals were banned since ghair mahrams must not hear a woman's footsteps. A ghair mahram, that is a person of other, supposedly he is not a person of the respective family or he is not associated with the respective girl, तो इसको गैर महरम बोला जाता है. So he must not hear a woman's voice when she is talking in public. Women were restrained from appearing in radio, television, or in any public gathering. So Taliban also drafted list of female between 12 to 45 years of age in a door-to-door campaign who were later forced to marry these insurgent groups. So women and girls were prohibited from entering schools, universities, and workplaces. And now we could even see that women were not allowed to wear clothes of their choice and were even executed for wearing tight clothes. And the penalty for homosexuality is execution under their respective regimes. तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पे ऐसा पनिशमेंट्स पहले हुआ है. तो 1996 में मैं एक इंस्टेंस बताता हूं. तो यहाँ पे क्या हुआ है? अ वुमेन्स टिप ऑफ हर थंब was chopped off as she was wearing nail polish. फिर एक टाइम पीरियड में 1986 में भी ऐसा कांड बहुत हुआ है. So around 225 women were detained and whipped for violating the Sharia code of thrust. And in around 1997, the Taliban's religious police, which was police force, that is the 5 international employees from their vehicle, and the women were harassed and insulted publicly before being whipped with a 1.5 meter long metal and a leather whip. तो ये हालत है, ठीक है, women's का in this Taliban regime. And to set up an example for other girls in the village, even Bibi Aisha's ears and nose were severed and was left to bleed to death, but she survived later on. She was married off to another family
through the tribal dispute resolution process, and the Afghan girl was punished for escaping the violence she suffered in the family. Okay, so therefore we could see that this type of things are very much in this regime of Taliban. Okay, and keeping in mind the atrocities that Afghan nationals face towards the end of this 20th century, particularly women, the Taliban's promise of an open and inclusive government, Islamic government in the country is totally unrealistic in the coming future also. तो इसी बेसिस पे यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो शरिया सिस्टम है ये टोटली रिटर्न हो चुका है और ये लोग स्ट्रिक्ट शरिया यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे. ठीक है, सो दैट इज रिस्पेक्टिव विद द न्यूज फ्रॉम कमिंग इन फ्रॉम अफगानिस्तान. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. Taiwan extends 1 year compulsory military service. तो यहाँ पे क्या बोला गया है? So we could see that this thing was basically news because recently the president of Taiwan, Tsai Ing-wen, said that she will extend its compulsory military service from 4 months to a year starting in 2024, citing the threat from an increasingly hostile China. So Taiwan constantly fears that the Chinese invasion because Beijing views the island as a part of its territory that one day it will be seized if necessary by force. So therefore यहाँ पे जो उन लोग का compulsory military service है, that is men born after 2005 are subjected to extend military service which will begin on January 1, 2024. And those who were born before 2005 will still be required to serve 4 months, but under a new training regime designed to improve the island's reserve forces. So now this Taiwan's defense capabilities will increase as a result of the plan. But it remains to be seen that how well the defense ministry will implement these respective reforms. Okay, so यहाँ पे public के द्वारा बहुत ज़्यादा criticization आया गया है because Taiwan is a democracy. Okay, so this public strongly criticized Taiwan's current 4-month military conscription requirement as being too brief and lacking the training that professional soldiers actually need. Okay, so therefore 90% of Taiwan's 1,88,000 military members are volunteers, while 10% of the men are serving the 4th month minimum requirement. And according to even a survey conducted in December this year, we could see that 73.2% of these Taiwanese adults stated that they would favor a 1-year military commitment as compared to this 4 months. ओके तो इसीलिए अभी यहाँ पे बहुत सारा कंसर्न्स किया गया है. अभी रिसेंटली ये जो लड़ाई का माहौल चल रहा है बिटवीन चाइना एंड ताइवान एंड ऑल्सो द इन्वेजन एंड ऑल्सो द इंटरेस्ट ऑफ यूएसए इन दिस रेस्पेक्टिव लैंड एरिया, तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे उनका जो 1 ईयर कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस है ये एक्सटेंड किया गया है. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. लास्टली, इंडिया मस्ट बिल्ड अवेयरनेस ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल. तो यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट बिकॉज दिस बेसिक हाईलाइट्स ऑफ दिस आर्टिकल सेज अबाउट दैट how we should make an immediate need for the population control. तो यहाँ पे member of parliament introduced a private member bill aimed at population control in India. So what is the background of the population control in our country? See, India was amongst the first nations to address its population problem in 1951. In around 1950, the total fertility rate was at around 9% and now 2%. Okay, so there was a steep decline after this 1970s. And indicating an inversely proportional relationship between economic prosperity and the fertility rate. So यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल बिल है, तो वहां पे तो नो गवर्नमेंट जॉब बता दिया था कि बिल सेड दैट नो गवर्नमेंट शुड बी ऑफर्ड टू कपल्स विद मोर देन 2 चिल्ड्रन. एंड देयर वर वेरियस नंबर ऑफ इश्यूज इन एसोसिएशन विद दिस कि देयर वाज नो क्लैरिफिकेशन अबाउट व्हाट वुड हैपन टू अ पर्सन हु हैड अ थर्ड चाइल्ड आफ्टर बीइंग अ गवर्नमेंट जॉब. And also, if a person with 2 children remarries and then had a third child, then what will happen? तो यहाँ पे बहुत सारे complications है, लेकिन फिर भी हम लोग का जो डाटाज है ये शो करते हैं that although the fertility rate of the Muslims is higher than the Hindus, the gap between the two has shrunk substantially. Because the gap between the Hindu and the Muslim fertility rate was only 1 point, which now has reduced to around 35 points. So आज अगर मैं उत्तर प्रदेश का देखूं तो वहां पे 20% ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो वहां पे टोटल फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन करके 8 पे चला गया है टू अराउंड 2.7 एज कंपेयर्ड टू 2011. तो 8 कब था? 1980s में, और अभी 2011 में ये 2.7 बन गया है. तो आज असम में देख लो जहां पे 33% मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो आज टोटल फर्टिलिटी रेट उन लोग का कितना है? 1.9% है. If I see about Jammu and Kashmir, तो मुस्लिम पॉपुलेशन इज इन मेजोरिटी, तो वहां पे 1980 से जो 5 फर्टिलिटी रेट था कि एवरेज 5 बच्चे पैदा कर रही है एक औरत, तो यहाँ पे 1.54% हो गया है 2011 में. So this data shows that Muslims have adopted better family planning measures than compared to the respective other peoples.
Okay, so therefore today the total fertility rate, which is referred to the total number of children born or likely to be born to a woman in her lifetime if she was subjected to the prevailing rate of age specific fertility in the population. तो आज पॉपुलेशन ग्रोथ का फायदा भी है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज ह्यूमन कैपिटल होता है, मोर स्कोप फॉर इनोवेशन होता है, economies of the scale for higher population, enable specialization, higher population densities, more efficient, ये सब भी होता है, लेकिन इसका कॉन्स भी है. Because increased pressure on natural environment is one of the most effective effort of this population growth. यहाँ पे वाटर शॉर्टेज होता है, इंक्रीज पोल्यूशन होता है, मोर वेस्ट क्रिएशन होता है, कंजेशन होते हैं, बहुत ओवर यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं. तो ये सब बहुत ज्यादा हम लोग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इन दिस रेस्पेक्टिव क्राइटेरिया. Okay, so therefore India's total fertility rate, which was around 2%, is even lower than the replacement level. So India as soon as possible needs to adopt population control measure, and the focus should be on strengthening public health infrastructure and even raising awareness about the need for this population control. Even United Nations data showed that there is a projected rise in the population of older people and a decline in the young population in many countries. तो therefore India should directly come up with this respective population control. तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे एक प्राइवेट मेंबर बिल प्रोड्यूस किया गया है in in the respective parliament, so that we could analyze or we could make control this population in the country of India as soon as possible. Okay, so इसी के बेसिस पे ये एडिटोरियल था. Okay, so we have this 5 number MCQs. Please do attempt these MCQs and do join our WhatsApp as well as Telegram group for further updates as well as to get some free study materials. So that's all for today. Thank you and Jai Hind.